done one-dimensional, both classical, quantum scattering. We started with classical scattering, discussed that, and found the differences between classical and quantum picture scattering. So let's start with classical 3D scattering. So what happens in classical 3D scattering? So we have So you have a target, you have a scattering center, so to speak, right? And it has some finite area or some area where it influences the other particles appreciably. Okay. You fire particles at this target, right? And initially the particles are free, and as they enter this area of influence, they interact with the scattering center, and that causes them to sort of deviate from your path, something like this, right? That's classical scattering. Your job is, given B, which is the impact factor, how close you would have gotten to the scattering center had there not been any scattering, right? So this is B, the closest you would come to the scattering center had there not been any scattering. And so given B, your job is to find this angle theta. Okay, that's what scattering means. So the particle is initially free, it's finally free, so it's moving in a straight line again. So like that. So like this, and so given B, find theta. Let's take an example. So you have a solid wall, right? Let's say a marble which is held fixed in place, or a big glass wall or whatever, and you're firing, let's say, BB guns at it. So BB shots come this way, right? And which way will it go? So this is a small particle that is coming towards this large object, which is spherical and smooth. Spherical and smooth, right? So which way will it go? Tangent draw करने पहले. Why would we draw tangent? We draw a normal. Or in order to draw a normal, you want to take it. Okay, fine. So, and then this, right? And where is theta? कौन सा वाला angle theta है? ये वाला, right? किधर वाला? हाँ, इधर वाला. ये angle theta. Let's call this alpha, and this must be alpha as well. Our job, given B, is to find theta, right? So, shouldn't be difficult. You can see that this is R, right? If this angle is alpha, then this is alpha. So beta is, B is, this is B. This is B, right? So B is R sine alpha is equal to B, right? And theta is pi minus 2 alpha, and so alpha is theta pi minus
theta over 2, and so r sine pi by 2 minus theta over 2 is b, which is cos theta over 2 b, which implies that theta is 2 cos inverse b over r if b is less than or equal to r and is 0 if right? So this would be an example of classical scattering. But if you were an experimentalist, that's not how you would do it, right? How would you do it? You wouldn't just put something down and then aim the gun, make sure that this distance is really b, and then for one particle at a time you would do it. You might be able to do it. And how should you do it? Well, you should sort of take a beam of particles, right? And all possible b's, let's say uniform, and just throw them there. And then measure the distribution of particles on your detector. So this particle is going this way, it has to be detected somewhere, right? So let's say you have a detector, and you throw a beam of particles, and then you measure where they come back. Right? So that picture will lead to something that we call the differential cross section. So again, let's go back to this picture on top there, right? This is the scattering center, and so if you're coming this way, you go like this, right? If I take sort of a beam here, so this is, and let's say it's symmetric around this thing. You see what I'm trying to draw? Right? So this is the scattering center here, and you take this distribution of particles and just throw it at the target, right? So something like this. All these particles go in this direction. So if you were to take one particle here, it will go in this direction, right? But if you were to take sort of a region, right? So this will go into a sort of a region here. Right? All of these particles will go in this area. So if you have a detector here, which has this much area, let's say, it will detect all of the particles coming in this part, right? So this is sort of, I don't know how to draw this, but this is an area, right? This is an area, and this angle is the solid angle unit. Okay? If you call this area d sigma, right? If I draw it like this, this basically is something like this. If I draw it here, if you are the target at this point, and if you look at this distribution of particles coming at you, I'm talking about this area. And all of the particles in this area are going to go into the detector. Right? Make sense? Right. So if I increase this, let's say if I increase this area is going to increase. Right? In general, what I should be able to write is that this thing is going to be equal to this, and this proportionality, whatever, constant, it will be a constant for a given theta and phi, right? So the relationship should look like this. The bigger this is, the bigger this should be,
and this is what connects the two. This thing is called the differential cross-section. And this is what we measure in the lab. I'll talk about how. Okay. Questions at this point? What are the dimensions of D? What are the dimensions of D? It should be dimensionless, right? Why should it be dimensionless? This is an area and this is an angle. So this should have dimensions of area. This is an area. So the cross section, of differential cross section, has dimensions of area. Okay. So if this is an infinitesimally small area, right? So this is B. Then I could write this d sigma. I could write as B dB d phi. What am I calling it? Yes, d phi. Okay. And d omega is sine theta d theta d phi, and hence, okay, so from now on I'll be assuming that the target is azimuthally symmetric, which means that if you get a particle at this B here, or this B here, or this B here, the deflection angle is going to be exactly the same. So you can't tell the difference like this. So if this is the z-axis and the target is there, if you go around the target, you can't tell the difference. So it's not going to depend on phi. So d of theta, so d of theta phi in that case is going to be equal to d theta. And if you assume this, then d of theta is b over sine theta dB over d theta mod. Right? You can see it from here. D sigma over d phi, this will cancel. You will get b over sine theta dB over d theta. Right? So आपने d capital D को b dB से कैसे replace किया? Capital B कहाँ है? So differential cross section. Thanks for this. और कैपिटल बी यहाँ पे कोई नहीं है, तुम इलेक्ट्रोडायनामिक्स अभी तक दिमाग में नहीं चल रही हो? कौन सा कैपिटल बी? Sir, नहीं capital D. कैपिटल डी ये है ना? It's a ratio of d sigma over d omega. So next slide. So d sigma d omega इसकी ratio b over sin theta db over d theta. Sir, b dB कैसा है? Oh, हाँ चलो बताओ. क्रॉस सेक्शन होता है। नहीं क्रॉस सेक्शन नहीं है, एरिया है ये. इसका एरिया Okay, sir, R dr. पोलर कोऑर्डिनेट्स में Yes, sir. एरिया कैसे लिखते हैं? It's R dr. sir. हाँ ये वो है b db d theta. So उसके ऊपर ये b है ना, राइट? सो अगर ये इन्फिनिटेसिमल हो, इसके अराउंड, इस पॉइंट के अराउंड इट विल बी b db d phi, राइट? और ये देखें, ये जो एंगल फाई है ना, ये एंगल फाई इज द सेम एज दिस एंगल फाई ओवर हियर, क्योंकि ये एसिमेट्रिकली सिमेट्रिक है ना. सो ये जो एंगल फाई होगा, ये इधर एंगल फाई वही बनेगा एग्जैक्टली. द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज थीटा. ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको लिखा है कि ये जो एंगल थीटा कोऑर्डिनेट्स में है, इसको सेंटर लेके ये वही एंगल थीटा जो डिफ्लेक्शन एंगल. ठीक है, अगर आप एक पार्टिकल ऐसा लें तो इस प्लेन में आ रहा है. ठीक है, मेक सेंस? Okay, so yes, but the question should have been why the mod? Nobody asked that question.
क्योंकि क्या जी? अच्छा, एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं, ये एरिया डिमेंशंस है, इसकी एरिया की डिमेंशंस है, ये खुद एरिया नहीं है। मतलब ये एरिया ही है, डिमेंशंस एरिया की हैं, तो ये एरिया ही है, लेकिन it has more structure than just area. ये इसलिए कि थीटा b बढ़ाने से थीटा कम होता है। So b is a decreasing function of theta. The theta is a decreasing function of b. So db by d theta negative होगा. So इसको mod रखा है ताकि ये हमेशा. So we don't want this to be negative. So what? क्योंकि आपको ये तो पता है कि हमेशा अगर इस तरह से लेंगे तो ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर नेगेटिव का क्या मतलब होगा? अगर ये नेगेटिव हो doesn't make any sense, right? अगर ये नेगेटिव हो जाए this doesn't make this whole relationship doesn't make any sense. Here this thing is a negative. This should be positive. Okay, so if you go back to this example, can we calculate d theta? Again, you can see here that the target is azimuthally symmetric. So b, let's calculate that. B is equal to r cos theta over 2. So db over d theta is equal to minus r sine theta over 2, 1/2, and so if you put a mod here, this becomes this, and d of theta is going to be r cosine theta over 2 sine theta r sine theta over 2. And if you put this here, if you put a half here, this becomes sine theta. So this is r square sine theta over 1/2 over. So you have to put a 2 here and 1/2 on the side. So this becomes 4 sine theta, and so r square over. So d theta in this case doesn't even depend on theta. What does it mean? It means that the probability, if you send this uniform distribution towards the target and you measure at different angles, the distribution is going to be independent of theta. To find a particle in a given direction is independent of the direction. So it'll be equally likely to get a particle here or here or here as long as the area of the detector is the same. Particles, a uniform beam is coming like this. You have a target here. You're measuring the distribution of particles on this side. It's independent of theta, means that if you put the particle here, or if you put the detector here, or here, in whichever direction you're going to put it, you're going to measure the same number of particles. So the probability of being scattered into a given direction is independent of the direction. सर ये लोग कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी दीदी बैठ हाँ वो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारी डेफिनेशन में शामिल है। नहीं, कैसे? B जो है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्शन की नहीं है। B अगर यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, इट्स द सेम B। और इस लाइन के साथ जो भी एंगल बन रहा है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो
चाहे वो इधर हो, ये वही थीटा है जो ये थीटा है, अगर ये वही भी है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसमें शामिल नहीं है। जो सिर्फ इंफॉर्मेशन शामिल है वो ये है कि ओरिजिनल डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, और इससे आपको ये भी पता लगेगा कि फिर इसका मतलब ये है कि ये बहुत दूर होना चाहिए और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना तो ये एंगल सेम होने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। सो ऐसे ही होता है ना कि आपके पास एक छोटा सा टारगेट होता है असल में, जैसे आपके पास लेट्स से कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन आपने फिक्स किया है, एक छोटा सा टारगेट होगा, बहुत छोटा सा, और एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही होगी इसकी तरफ, बहुत पतली बीम होगी, लेकिन उसमें आपको पता होगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पार्टिकल। जबकि जब आप उसको मेजर कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन को, जैसे 2 फीट 3 फीट अवे कर रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज प्रैक्टिकली इंफिनिटी इन दैट केस। तो सर फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर स्कैटरिंग यूनिफॉर्म होगी? नहीं, ये तो एक खास केस लिया है, उस केस में है ये तो हार्ड स्फीयर वाला क्लासिकल केस है। सर लेकिन इसमें हमने ये तो नहीं कहा कि ये फोर्स नहीं हो सकती। क्या हो गया? यानी जनरल केस नहीं, ये जो मैंने लिया है B = R cos θ/2, ये तो इस केस से आ रहा है ना, ये जनरल है, ये जनरल है, नहीं, ये तो इस केस से आ रहा है, और ये केस बहुत स्पेशल केस है जिसमें इसको हार्ड स्कैटरिंग का हार्ड स्फीयर कहते हैं, कि आप थोड़ा सा भी इसको मिस करेंगे कोई स्कैटरिंग नहीं है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो स्कैटरिंग शुरू हो जाएगी, तो इसकी हार्ड बाउंड्रीज है, ठीक है गाइस। अच्छा अब आप एक चीज होती है जिसको टोटल क्रॉस सेक्शन कहते हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं, वी विल नॉट बी गोइंग इनटू दैट, लेकिन बेसिकली आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डी ओमेगा, राइट, सारे एंगल्स के ऊपर 4 पाई एंगल्स के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर दे तो आपके पास टोटल सिग्मा निकल आएगा, राइट। और होमवर्क शो करें कि इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, हार्ड स्फीयर के लिए टोटल सिग्मा क्या होना चाहिए, इट्स द टोटल एरिया दैट इट प्रेजेंट्स, है हां एग्जैक्ट पाई b स्क्वायर नहीं पाई r स्क्वायर, तो b हाँ b = r के बाद स्कैटरिंग नहीं होती ना, राइट, एग्जैक्टली। सो सिग्मा टोटल इज काइंड ऑफ एन इफेक्टिव टोटल एरिया that the target presents to the beam. हाँ, तो जो बीम आ रही है उसके लिए तो टारगेट एक इस तरह से एक गोला सा है, राइट। सो ये उसका टोटल इफेक्टिव क्रॉस है। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए तो इंफिनिटी होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग अगर हो रही है ये इंफिनिट होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोटॉन से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे उसका असर भी तो कम होता जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप 6 सेंटीमीटर दूर चले जाएं प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन लेके, it will almost be negligible, right, because of the smallness of the charge. और so उस केस में अगर ये इन्फिनिट नहीं होगा, आपको इफेक्टिवली देखना पड़ेगा कि जो इफेक्टिव एरिया ऑफ कंसिडरेबल स्कैटरिंग है वो क्या है, ये वो सिग्मा। सो यू कैन कैलकुलेट दैट यूजिंग दिस थिंग। सो अगर ये थीटा फाई पे डिपेंड कर रहा होता, देन वी वुड हैव टू डू एन इंटीग्रल एंड दैट वुड गिव यू द टोटल क्रॉस सेक्शन। डज मेक सेंस? एनीवे, ये एक ज़िमनी बात है। वी आर आफ्टर दिस। Now, as I said, this is how you would like to do the experiment, right? अब जब लैब में आप जाएंगे, right, तो आपके पास कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको पता है, और उनकी टर्म्स में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप जो थेरिस्ट है, अगर उसने लैब के साथ मैच करने हैं रिजल्ट्स, he will have to predict this from his table। उसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी कि डिटेक्टर पे क्या मिलेगा।
लेकिन लैब में आपके पास क्या पैरामीटर्स हैं जिनकी टर्म्स में आप इसको निकालेंगे? Well, there is this thing which is called the intensity. This is incident particles. This is the number of incident particles per unit time. अच्छा, number of incident particles per unit time क्या होगा? Flux नहीं होता, क्योंकि flux में unit area भी आता है, right? So incident particles per unit time is the luminosity. ठीक है? लेकिन हम ले रहे हैं incident particles per unit time per unit area. लेकिन for some reason particle physics इसको luminosity कहते हैं, यहाँ की ये intensity है, ठीक है? लेकिन they call it luminosity. So the number of particles that you will get in this area is how much? The number of particles that you're going to get in this area. Multiplied by d psi, luminosity to d. Excellent. Yes, exactly. So the number of particles that you will get into d omega, right, is just L d sigma, right? Per unit time की बात कर रहे हैं, dn और dt है. Yes, that's right. You're right. So this is the number. I'm not going to call it dn by dt, but if you want, call it dn by dt. But this is, if in 1 second the number of particles that you're going to get is L times the second. Yeah, absolutely. So this thing is L d of theta d of phi, right? And it is the same number of particles that you're going to get in this area, right? So d theta is simply 1 over L dn over d omega, and remember, as she said, this is the number of particles that you're getting in this region per unit time. Okay. So now this is all observable. You know what the luminosity of the incident beam is, and you know how many particles per second you're getting in d omega. So this is delta n, this is the number of particles per unit time that you're getting in the area d omega. You know both of these, so you know this. And dividing that by 1 over L, you get d theta. So this is the point where experiment meets theory. Okay? So you can do this in the lab, and now our job is to predict this d of theta. Questions? And now, by the way, you can also sort of, yeah. Where did? Time. All of this is in 1 second. So this is the number of particles that you're getting on the target in 1 second. This is the number of particles that you're measuring at the detector in 1 second in this area. This is all in 1 second. So the time is just 1. Okay, so I've been calling this the probability. Can you see this from here? This is the total, and this is the fraction that you're getting in that area at angle theta. So this is the probability of being scattered in the direction theta. Okay? Fraction over total. Homework. I forgot to give you the homework last time. I think. Let me see. Did I give you the homework last time? No, sir. I don't think yes. So I did not. So this is the difference.
and Shankar 5.4.2. Okay, so let's be on with our quest to find this d theta. So what is our, so if we're doing it quantum mechanically, then what is our job? You will be given a scattering center. So when you say that you will be given a scattering center, what does it mean? What does it mean? You will be given a potential. Okay? And our job will be to, given this potential, find this. Okay? So, and how will you go about doing this? Now you guys remember that we did the one-dimensional scattering, and I sort of started with this wave packet description, right? And we talked in length about it, and in the end we decided that if we just calculate, let's say JR over JI, instead of doing all of this, we'll get, for example, the reflection coefficient, right? This is exactly what I'm going to do here. I'm not going to say that you have a scattering center and then you have a plane wave coming towards it, and then finally you will have a plane wave and you will have a scattered wave and blah blah. We're not going to go into that picture. Or, I mean, I'm not going to say the plane wave, some wave packet, right? And in the end you will have a wave packet and some wave function here. That would be just too messy. लेकिन अगर आप उसको मोमेंटम की आइगन स्टेट में प्रिपेयर करते हैं तो बेसिकली यू हैव प्लेन वेव्स. अगर वो सारे के सारे इसकी तरफ डायरेक्टेड हैं पार्टिकल्स और इसका जो ये फेस है उससे परपेंडिकुलर आ रहे हैं, देन द ओनली थिंग्स दैट चेंज आर अलोंग दीज प्लेन्स, राइट? I mean, on these planes nothing changes, probabilities don't change, so you have plane waves. And so again, what we'll do is go to this picture. So what we'll calculate is J scattered over J incident. Right? So in this case, it will be slightly different. And now there's another thing that I should have mentioned, is that in one-dimensional scattering, you could either have reflection or transmission, right? Now it's scattered. So you could go at any angle. So you're not particularly looking for reflection or transmission. You're just looking for how many particles you get on the detector in a given direction, right? So, or what is the probability of scattering in a given direction, not just reflection and transmission. So that's another difference. Okay, so that's that. So let's start. So again, yes, I was going to say something here. I think we started. Some questions. So, where did these come from? We had found out the eigenstate of the Hamiltonian, right? And in that we had identified the incident wave and the reflected wave, right? So we started with the eigenstates of Hamiltonian. That's what we're going to do. Again, we're just going to go into the eigenstates of Hamiltonian, not just a wave packet, but eigenstates of Hamiltonian. And we're going to assume that the particle in this direction, it is free. It's a free particle, and in this direction it's also free. Right? And under these assumptions, we're going to sort of, these are very simplified assumptions. Sir, if you have a spherical potential, then would the behavior of the scattered waves be similar to the one we did for the hard scattering? Why should they? So you're confusing, I think, for some time now, since this class started. You're confusing azimuthal symmetry with that problem. That problem has azimuthal symmetry, but not
every azimuthally symmetric problem is going to look like that. For example, if you're throwing electrons at electrons, right, that is going to be, that is not If we going to be are throwing electromagnetic waves on a hard sphere, then would they scatter the same way as the... Yes, almost. Yes, almost. You'll have to do sort of matching of the boundary conditions and blah blah. No, it's a hard sphere. It's not charged sphere. It's just Why would the electromagnetic wave scatter off it? because it is a surface. Which carries electrons? No. No. Yes. 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 If it carries electrons, right, then that's what the electromagnetic waves are going to be interacting with. And that's how they're going to be scattered. If it's a reflective surface. Okay, fine. Again, there's going to be electrons. How else are you going to reflect? So would they reflect the same way on the top? No, it will be more complicated, but it's going to look a lot like this. Right? So if you have perfect what do you call scattering in some sense, like a mirror, right? Then yes, it is going to look something like this. And it would be independent of the heat of the Well, I'm hesitating to make this comment. Maybe then, I haven't looked at the problem, so maybe there is some angle dependence, but it looks very likely that it shouldn't be. But anyhow, the point that we were discussing was that azimuthal symmetry shouldn't be confused with hard sphere, right? So you could have a spinless charged particle, another spinless charged particle coming towards it, both point particles. Then this is going to be azimuthally symmetric, right? And it's not going to be hard sphere. Anyway, so again, we're not going to go into this picture. What we're going to do is just find out eigenstates of H, and among those, for a given value of the momentum, these are going to be in some sense momentum eigenstate, we'll identify the incident wave and the scattered wave. And then we're going to use this formula to calculate this. Okay? Okay, so that's what our Hamiltonian looks like. Right? Where H naught is the free particle Hamiltonian, right? And remember that this is three-dimensional momentum now. And the eigenstates of H naught, let's say, are going to be, and we have done this problem. You guys remember we have done three-dimensional free particle, right? You guys remember the eigenstates were something like e to the I k r over r, right? And other. So for example, e to the so these are plane waves, and these are spherical waves. Both of these are solutions. Okay. The other assumption that we're going to make is that this scattering is elastic. What does it mean, elastic? Momentum is conserved. Momentum is conserved. And the energy is conserved. Is it energy always conserved? Is the momentum always conserved? No. When we say that the energy is conserved, the energy of the incident particle is conserved. Right? The energy overall and the momentum overall is going to be conserved, but we're talking about the incident particle. So this static center,
the scattering temper is such that it does not absorb any energy from the particle. So what does it mean? So if you have, this is the energy of the particle in some sense, right? If it is in this state, then the energy of the particle is this, right? When it is free. So what are we saying? We're saying that the energy doesn't change. Does it mean that the particle doesn't get scattered? Because if the energy is not going to change, this is not going to change, is it? So we're back in quantum mechanics. We were doing classical for a while, but now we're back in quantum mechanics. So you guys have to pay attention and become quantum mechanical. What it says is that the state that you're trying to find, we're trying to find this state. These are the eigenstates of this element. These are just the eigenstates of H. These are just the eigenstates of H. By the way, these could be either plane waves, right, or spherical waves. What we're saying is that if the scattering is elastic, then you're looking for the solution with the same energy. Now the state might not be the same, but the energy has to be the same. That's what we're saying. And remember, these are eigenstates of H, these are eigenstates of H naught. And if V is small, we can sort of do a perturbative picture. That's what we'll do later. I'm going to do this in general for the time being, but later on, we're sort of going to do a perturbation case. Sir, तो second psi है वो psi prime कितना चाहिए? क्या कितना चाहिए? हमें scattered और incident wave की एक ही energy है. तो हम equation हम ये कह रहे हैं कि scattering से particle की energy change नहीं होगी. In other words, if the particle was free, right, somewhere over there, and it was coming with energy E in this state, right, but of course, the total Hamiltonian was still this. We're just assuming that this was negligible. So the particle was sort of almost in this state, right? And as it goes off, now it's in the eigenstate here. Psi. This has the same energy. सर अब हम क्या भी ऐड करें? क्या करें? सर अगर reflected particle भी infinite पे निकल गए, तो तब उसका भी फिर से negligible. हाँ, फिर से negligible होगा. लेकिन अब वो direction change होगी ना उसकी. So it's in a different state. It's the same energy. Dot apply कर सकते हैं. H dot. So the H dot plus B. H dot. इसको हमेशा dot किया. हाँ, H naught. So फिर H naught क्या? हाँ, ये उसके बाद दोबारा H naught की ही eigenstate में होगा, यूँ समझ लें, right? All this time basically it's in eigenstate of psi. जब हमने वो problem भी किया था, right? तो उसमें हमने जो psi लिखा था, right? Psi of x लिखा था, वो a e to the I k x plus b over a e to the minus I k x, right? Theta of minus x plus c over a e to the I k x minus, right? ऐसे लिखा था ना? Wait. So, अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है? ये exactly वही picture हम generate करने लगे. This is an eigenstate of H and not H naught. लेकिन उसमें आप identify कर लेते हैं कि eigenstate of H naught कहाँ पे? ये है. तो जब आपको ये पता लग जाता है, तो आप ये कहते हैं कि ये incident wave है. और तो इसको आप छोड़ दें, आप देखेंगे रिफ्लेक्टेड पार्ट और ट्रांसमिटेड पार्ट क्या है. जब हम यही काम यहाँ पे करेंगे तो ये लिखा जाएगा, उसमें एक ये पार्ट आएगा, ये हमें बताएगा कि इंसिडेंट वेव क्या है, और जो बाकी हिस्सा होगा वो आपको बताएगा कि स्कैटर्ड वेव. ठीक है? सो आप शुरू से ही आइगन स्टेट्स इसकी निकालेंगे, लेकिन आपको इसकी आइगन स्टेट्स पता होनी चाहिए, वो आइगन स्टेट्स जिसमें आपने इनिशियल स्टेट को प्रिपेयर किया, जो पार्टिकल आ रहे हैं उनको प्रिपेयर किया, राइट? ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इंसिडेंट बीम क्या है. सर
ट्रांसमिटेड बीम एक साथ तो नहीं लिखते हैं। एग्जैक्टली यही तो हमने पिछली दफा किया था कि अगर आप वेव पैकेट पिक्चर में हैं, आप इंट्यूटिव पिक्चर चाहते हैं, तो वो एनालिसिस कंप्लीटली डिफरेंट, वेरी लेंथी, हार्ड, और उसमें भी आपको अपने वेव फंक्शन को केस स्पेस में पीक करना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। अभी लेकिन अगर आप आइगन स्टेट्स ऑफ एच की बात करें तो आपके पास वो पिक्चर बाकी नहीं रहती है अगर आप आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम है, क्योंकि फिर आपके पास प्लेन वेव्स वगैरह चीजें हैं। अब ये फॉर ऑल टाइम फॉर ऑल स्पेस एग्जिस्ट करती है। We don't have that luxury anymore of thinking that there is a particle, that there's a wave packet that's coming towards the target, sort of quote unquote hits it, then splits, and in the time t, in the limit t going to infinity, you sort of cleanly can make off the reflected part from the transmitted part, and the incident wave is sort of gone, right? वो इस सूरत में आपके पास वो उस तरह की पिक्चर नहीं होगी। आपके साथ एक वक्त में मौजूद होंगे। आप अगर आपको H नॉट की आइगन स्टेट्स पता है तो फिर आप उसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इंसिडेंट पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो हमने वो सारा जो एक टाइम स्पेंड किया था वो यही पिक्चर डेवलप करने के लिए किया। सो ये हमें चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंसिडेंट वेव क्या होगी, और असल में आइगन स्टेट्स हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। So we'll be talking about the eigenstates of H, but they will contain this, and we will sort of keep in the back of mind that we have to sort of include them here somehow, right? So that we can identify this part cleanly in this. Okay? Now the claim is that you can write psi like this. Psi is equal to 1 over E minus H naught V of psi plus phi. This is the solution. But it's not really a solution. It gives psi versus psi. But now, when you have written it, you can identify this part as the incident wave, and this part sort of, if you sort of do this iteratively, and then you will see that. So you have to get it. हाँ, ये मैं बताता हूँ कैसे। Well, just apply E minus H on both sides, or H naught minus H minus E. What do you want to do? Yeah, H naught minus E psi on both sides. So you'll get V of psi plus H naught minus E phi. Right? And so this can be written as अच्छा, ये तो नजर आ रहा है ना, H नॉट माइनस E, दिस इज 0, ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, so then this thing, oh yes of course, H naught plus V of psi is equal to E psi, ठीक है। H naught psi सॉरी यहाँ पर माइनस है, ये E minus H naught है ना, H naught minus E, okay? So this will become H naught plus V psi equal to E psi, which is just the equation that you were trying to solve. So, but that's not the bigger problem here. Can you see? Can you spot something disturbing? H naught की eigenstate. क्या वो? Reflected wave. Sorry, reflected. Yes, reflected wave.
रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पे कोई नहीं, स्कैटर्ड वेव है। आपको थीटा वापस भी आ जाए, आप थीटा इज इक्वल टू क्या एंगल होगा 180 पे भी आपको पार्टिकल्स मिले, ठीक है, दैट विल quote unquote be reflection, but we're talking about scattered wave, right? और अगर आप इसको देखें, जब अभी मैं भाषण दे रहा था, वो ये था कि ये साए में आपने आइडेंटिफाई करना है इंसिडेंट वेव, the rest is scattered wave. So this is the scattered wave. The scattered wave is an eigen state of psi. वो हमने हाँ ये जो चीज है ये आइगन स्टेट ऑफ एच ही है ना, ये आइगन स्टेट ऑफ एच है ना। अब आपको मसला जो है ना वो ये है कि हमने साई इन टर्म्स ऑफ साई लिखा हुआ है, राइट? सो वी विल हैव टू रेमेडी दैट समहाउ। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट quote unquote a solution, but this tells you that this part is the incidence wave and this is the effect of scattering. लेकिन बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि this operator is singular because E is in the eigenvalues of H naught. अच्छा, यहाँ पर एक और भी आपको चीज नजर आनी चाहिए, वो ये है कि both the eigenvalues of H and eigenvalues of H naught, they both form a continuum. What does that mean? Really? What does that mean? That means that if you have something like E prime, then it's delta of E minus E prime, something like this, right? Instead of product of delta. So there are no things that you can sort of put these indices on, right? So you are in this picture. So just like free particle, the eigenstates or the momenta or the energies of the free particle form continuum. So you'll be doing a lot of integrals instead of sums. That's what it is. Okay. So this thing is singular. So what you do is that for the time being, you just add this small epsilon there. Now this can't be. Now this will never go to zero for a finite epsilon, right? So this equation, this is called the Lippmann, showing your equation. Okay. By the way, all of this is from I'm following modern quantum mechanics, Sakura. Yes. So questions? Questions? Okay, so I still haven't chosen any representation, right? So this equation, as it stands here, does not have any representation. What does representation mean? What does representation mean? I haven't chosen any basis, right? Usually, we'll try to solve this equation in position basis, position representation, but you can talk about this equation in momentum representation as well. In fact, I'll give you this as a homework to talk about this equation in momentum. Okay, so by the way, since I've put a plus minus epsilon, if you want, you can put a plus minus there. आयोटा अगर ये सिर्फ एप्सिलॉन होता तो फिर तो क्योंकि ये इसकी आइगन स्टेट कंटिन्यूम फॉर्म करती हैं तो E माइनस एप्सिलॉन या E प्लस एप्सिलॉन नहीं इसकी आइगन स्टेट में होना था। Anyway, so how would you write this equation in Schrodinger representation?
So in showing representation, how would we convert this equation into, let's say, how would we write a psi of x and blah blah? बिल्कुल ठीक है. So let's say x, right? Psi of plus minus, right? And this would become x 1 over e minus h naught plus minus I epsilon psi plus 5x. Right? So this will become psi of plus minus x, and you will have x. Psi plus minus. Psi plus minus. यहाँ पर प्लस माइनस का होता है ना इसमें. ये प्लस अगर करें तो प्लस, माइनस करें तो माइनस. अच्छा, मजे की बात ये है कि ये सारा कुछ आप EM में कर चुके हैं. कौन मुझे बताएगा कि ये क्या लिखना है? अभी जो इक्वेशन लिखी जाएगी उसके बाद देखते हैं. अगर किसी को ख्याल आता है कि ये तो कोई नई बात नहीं है. अच्छा, अब अगर इसको psi of x प्राइम लिख दिया जाए यहाँ पे, अब क्या हुआ है? Oh, wait. You're absolutely right. B कहाँ गया? B यहाँ है. Sorry. ये तो बिल्कुल गड़बड़ कर दिया. इक्वेशन भी गलत है. ये x, ये ऐसे है. x प्राइम v psi plus x psi, which is phi of x. Right. Yeah. अगर आप इसको देखिए ना, x प्राइम v और यहाँ पर एक साइन कर लें और dx प्राइम ये कर लें, तो ये है मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ v, राइट? ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ v है और ये psi ऑफ x डबल प्राइम. ठीक है? सो इस चीज को आप फिलहाल ऐसे ही रहने दें, राइट? ये क्या चीज है? अच्छा, ये सारी इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी और आपने उसको एक इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया. और ये कब होता है? ग्रीन्स फंक्शन. वाह, यस. सो g प्लस माइनस x प्राइम. कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आती है. In fact, it's very easy. Easy on your side. अच्छा, ये क्या चीज है? ये जो चीज, ये सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन, राइट? ये in momentum representation. And remember that in momentum representation, the energy is just for free particle h cut square k squared over 2m. Okay? This is the energy. So this is homework. अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि आप सब कुछ भूल जाएं, सब इक्वेशन भूल जाएं. जस्ट कैलकुलेट द ग्रीन फंक्शन. ठीक है? पहले ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट कर लें, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एनी पोटेंशियल. राइट? ये ग्रीन फंक्शन में यही होता है ना कि एक दफा आपने ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, देन यू कैन डू इट फॉर एनी पोटेंशियल जस्ट बाय सॉल्विंग एन इंटीग्रल इक्वेशन. You don't have to sort of
do every different problem for every different V. Okay, so this is what we're after. Right? This is what we want to get. So this is G plus minus X prime. So I tend to forget putting these vectors. We shouldn't. अच्छा, आप देखें कि ये G plus minus है, इसको कैसे लिख सकते हैं? एक, अब ये क्या है ना, ये आइगन, इनके इसकी जो आइगन स्टेट्स हैं, H नॉट की जो आइगन स्टेट्स हैं वो क्या है? फ्री पार्टिकल स्टेट्स। तो फ्री पार्टिकल स्टेट्स कौन सी होती हैं? आइगन स्टेट्स ऑफ momentum, right? So if you want to calculate this, you should try and go into the momentum picture. E prime. ये दोनों मिलकर डेल्टा फंक्शन देंगे ना आपको। Oh, sorry, हाँ, you sure? Delta of P prime, delta cube of P prime minus P. Yes, it's getting confused. Yes, that's what it is. Yes. हाँ ये ठीक है, ये पॉइंट आउट किया है। सर कि मैं नीचे पर डबल प्राइम नहीं आना चाहिए। डेल्टा फंक्शन से नहीं पड़ता। तो वो हो गया। हाँ। ओके, जैसे ये कह रही है वैसे कर लें। एक इंटीग्रल कर लें, डबल प्राइम वाला इंटीग्रल कर लें, ये डेल्टा फंक्शन खत्म हो जाएगा और हर जगह आप प्री प्राइम कर दें, ठीक है? और इसको अगर आप इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/2 पाई h का क्यूब और ये हो जाएगा p of x minus x प्राइम, ऐसे होगा ना? That goes over h। और अगर आप चाहें तो आप इसको भी कन्वर्ट कर दें, ये बन जाएगा h का स्क्वायर a स्क्वायर ओवर 2m। ये वो एनर्जी है जिसके साथ आप पार्टिकल्स को इंसिडेंट कर रहे हैं, k उनका मोमेंटम, ठीक है? और अगर आप एज कट से भी छुटकारा चाहते हैं तो एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लें q, ये हो जाएगा d3q और इसके साथ ये एज कट खत्म हो जाएगा क्यूब में, ठीक है? ठीक है, ऐसे करता जाओ क्या पूरे स्टेप्स कर दें? हाँ, ये बन जाएगा h का स्क्वायर q स्क्वायर, well just this is not a big deal, आप इसको घर जाके देखेंगे तो ये हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा और ये यहाँ पर सर आपने ई की वैल्यू भी बात की है एक्सप्रेस के केस के बारे में। सर ई तो डिफरेंस नहीं है वहाँ पर ई में, तो क्या हो? सर ई नहीं, ये कह रही है कि अगर ई में फर्क नहीं आ रहा तो क्या ये क्यू और के इक्वल नहीं होने चाहिए, ये कह रही है? ये भी है और साथ ई की वैल्यू आपने कहा ना कि इंसिडेंट की है, तो वहाँ पर तो फर्क वो भी नहीं है, मतलब एच नहीं, ई की ये तो इंसिडेंट वैल्यू है ना, तो हमें पता है हम क्या किस एनर्जी किस स्टेट में पार्टिकल्स प्रिपेयर किए, तो इंसिडेंट कर रहे हैं हम पार्टिकल्स टारगेट के ऊपर, वो तो इस एनर्जी के साथ है। तो अब बताओ। और सर ऊपर वाली जो हमने स्टेट हाँ, उसमें भी है वो दोनों हम ये कह रहे हैं कि जब इलास्टिक स्कैटरिंग होगी तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, सो ये जो स्टेट होगी इसकी एनर्जी भी ई ही हो, सॉरी ये स्कैटरिंग स्टेट है तो या ये इसमें स्कैटरिंग का इफेक्ट है, तो ये
ये भी सेम आइगन वैल्यू के साथ होगा। ये वो स्टेट है जिसमें आपने प्रिपेयर किए हैं, पार्टिकल इंसिडेंट किए हैं, जब स्कैटरिंग हो रही होगी तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, हाँ वही रहेगी। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि ये क्या उस वजह से क्यू और के सेम हो गए? ये क्यू कहाँ से आया था? यहाँ से आया ना, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये तो एक इंटीग्रेशन हो रही है फ्रॉम -∞ टू +∞, सो क्यू इंटीग्रेशन वेरिएबल है। ठीक है सर हमने सारे टी प्राइम्स को लिखा। Okay. So, अच्छा, अगर आप इस h का स्क्वायर ओवर 2m को भी बाहर निकाल लें तो ये 2m ओवर h का स्क्वायर हो जाएगा, राइट? और तो या सर टी डबल प्राइम कहाँ से लगा? ये तो वही कह रही थी कि सारे स्टेप्स कर लिया, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको जगह दिनों में ध्यान देंगे, कोई मसला नहीं। यहाँ पे एक डेल्टा फंक्शन था, यहाँ पे एक डेल्टा फंक्शन था, ये लिखा हुआ है डेल्टा d3p था यहाँ पर, d3p प्राइम वो खत्म हुआ और उसके साथ हमने वो डेल्टा फंक्शन खत्म कर दिया और हर जगह जब आपकी डबल प्राइम था उसको p प्राइम कर दिया। ठीक है, मेरा ख्याल है अब आप लोग जो है ना टेंशन खत्म हो गई आपको मेरा लतीफा सुनाना चाहिए। अच्छा नहीं आप नाउ, अच्छा इसको कैसे करते हैं? इसको अगर आप पहले ना तो बन गया है k स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा एप्सिलॉन प्राइम कर लें, थोड़ा डिफरेंट हो गया, उससे कुछ नहीं करता। और यहाँ पर 2m ओवर h का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा इस इंटीग्रल को कैसे करते हैं? रेसिड्यू थ्योरम के साथ। ठीक है, अब अगर आप कॉम्प्लेक्स के स्पेस में चले जाएं, कॉम्प्लेक्स के स्पेस में चले जाएं, सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप के स्पेस में इस चीज को z एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, यानी कि q z के अलॉन्ग लेते हैं। सो q डॉट x माइनस एक्स प्राइम जो है ये हो जाता है q x माइनस एक्स प्राइम मॉड कोसाइन ऑफ थीटा, राइट? दिस इज द यूजुअल थिंग दैट वी डू। सो जो इंटीग्रल आप सॉल्व कर रहे होते हैं वो ये होता है 0 to infinity, राइट? q स्क्वायर्ड dq ओवर 2 pi cube minus 1 to 1 d cosine theta e to the I cube x minus x prime cos of theta over k squared minus q squared plus minus I epsilon, and you have 2m over h squared. 2m over h square, all of that. Yes. And और क्या रहेगा? dpa. And agreed? अब ठीक है, जब आप इसको करेंगे the only cosine theta is here. In fact, I shouldn't have written this over here. Anyhow, so इस integral को देखिए, इस integral इसको. So this thing, let me write down everything now. 2m over h squared 0 to infinity q squared dq over 2 pi cube k squared minus q squared plus minus iota epsilon, and this thing is going to be e to the I cube x minus x prime minus e to the minus I cube x minus x prime.
राइट, ओवर I क्यूब x माइनस, ऐसे ही होगा। इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने से ये आया, फिर लिमिट पुट कर दी माइनस और प्लस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस साइन, और ये आपको 2 पाई दे देगा, एंड सो तो यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब ये q कैंसिल हो गया इसके साथ, ये q आ गया इधर, आयोटा 1 ओवर आयोटा, सो माइनस यहाँ पर आयोटा डालें और x माइनस एक्स प्राइम को बाहर निकालें, राइट। तो अब ये चीज ऐसे करेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये देखें कि ये ऑड है, q going to minus q, this is odd, this is also odd, so the whole thing is even. So आप 1 ओवर, और यहाँ पर जो q स्क्वायर्ड है वो स्क्वायर्ड है, ठीक है। सो आप इसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये 1 ओवर 2 जब से कैंसिल हो जाता है इसके साथ, और 4 पाई आएगा, क्योंकि एक 2 पाई आया था, नहीं उससे तो हमने कर दिया था, एक और पाई कहाँ से आ रहा है, पाई कहीं से आएगा, e टू दी प्लस माइनस आई के x माइनस एक्स प्राइम ओवर x माइनस एक्स प्राइम। जब आप कर क्या रहे हैं, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जो माइनस आयोटा एप्सिलॉन वाला है वो यहाँ पर आएगा, और प्लस एप्सिलॉन आयोटा एप्सिलॉन वाला वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप ऐसे करते हैं इंटीग्रल या ऐसे करते हैं, आपके पास दो अलग अलग आंसर आएंगे, और उसके बाद आप लिमिट ले लेंगे एप्सिलॉन गोइंग टू 0, दिस इज द आंसर दैट यू, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? This is homework. Show this. Show this by doing so now you can go back to this equation. If you go back to this equation, you know what dx of x is. You still don't know what this thing is. This will be known only when you are given v, right? अच्छा, अब v के बारे में हम एक assumption करेंगे। अच्छा, by the way, any questions? Any questions, guys? हाँ जी, क्या हो गया? हाँ, ये खत्म हो गया। इंटीग्रल कहाँ से बाहर निकाला? यानी तो x और x प्राइम के बीच में निकालना, ये ऑपरेटर है अंदर, ये ऑपरेटर है अंदर, लेकिन ये चीज क्या होती है आपके पास, ये चीज क्या है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, अच्छा, ये साइन ऑफ x है, ये चीज क्या है, x ओमेगा साइन, ये क्या है, इसमें से ओमेगा बाहर निकाल सकते हैं, नहीं सर, लेकिन ओमेगा ऑपरेटर है, हाँ ओमेगा वो भी ऑपरेटर ही है सर। v हम ऑपरेटर नहीं लेते, v हम ऑपरेटर नहीं लेते, सर हम वो ये कह रही है, अच्छा वो ये कह रही है, वो ये कह रही है कि अगर आपके पास v हो और अगर v सिर्फ लोकली, यानी कि जहाँ पे पार्टिकल होता है, ये v एक रीजन में है ना, एक पार्टिकल आया है, जहाँ पर वो पार्टिकल मौजूद है, अगर वो उसी पॉइंट से स्कैटर हो रहा है और बाकी इर्द गिर्द के पॉइंट्स को फील नहीं कर रहा, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आप कह रहे हैं,
लेकिन अगर एक रीजन है जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, उस पार्टिकल के ऊपर, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये चीज लोकलाइज है कि नहीं।